जी, तो हम 2 मिनट वेट करते हैं, फिर जुबैर जफर हमारे साथ हैं। जी। जी, तो फिर आप इंट्रो स्टार्ट कर सकते हैं। ओके। जी सर। अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी। मेरी स्क्रीन विजिबल है आप सबको? जी सर, आपकी जी स्क्रीन सर। पर है। माय नेम इज जुबैर जफर। आई एम मॉडरेटर एट आई कोड गुरु। और आई कोड गुरु एक ऐसा इंटरनेशनल फोरम है जो सिलिकॉन वैली के इंजीनियर्स ने डिज़ाइन किया है ताकि वो पाकिस्तानी यूथ को गाइड कर सकें। एंड the mission of iCode Guru is to produce employability in within Pakistan for Pakistani youth, ताकि वो जो इंडस्ट्री इंडस्ट्री के दरमियान और जो स्किल सेट के दरमियान जो स्टूडेंट्स गेट करते हैं फ्रॉम यूनिवर्सिटीज उस गैप को फुलफिल कर सकें, ताकि और स्टूडेंट्स हाई टेक स्किल सीख सकें जो हमारे iCode गुरु के ऊपर सिखाए जाते हैं, ताकि वो फेसबुक, amazon, नेटफ्लिक्स ऐसी हाई टेक कंपनीज ज्वाइन कर सकें। उसके अलावा यहाँ iCode गुरु के ऊपर आप लोगों को इंटरनेशनल मेंटोर्स के साथ कम्युनिकेट करने का मौका मिलता है। हमारे iCode गुरु के ऊपर हर मंथ एक हैकाथॉन इंट्रोड्यूस करवाया जाता है, जिसके अंदर आप जाके इंटरनेशनल मेंटोर्स के साथ काम कर सकते हैं इन अ फॉर्मल एनवायरनमेंट। एंड iCode गुरु इस तरीके से फंक्शन करता है कि वी हैव 6 सेशंस पर डे। ठीक है, जिसके अंदर एक वीकली वेबिनार होता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस टाइम आप वही अटेंड करें। उसके अलावा वीकली वर्कशॉप होती है, और उसके अलावा लीड कोड का सेशन डेली होता है। आइल्स एंड जीआरई के कोर्सेज करवाए जाते हैं। बेसिक पाइथन पाइथन फॉर बिगिनर्स करवाई जाती है। उसके अलावा मशीन लर्निंग, डाटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स। अभी हमारा डीएसए का एक कोर्स मंडे से स्टार्ट हो रहा है। और इसके अलावा अगर आप कोई भी कोर्स मिस कर देते हैं किसी भी रीज़न की वजह से, या आपका टाइम मिसमैच हो जाता है, तो आप सारे के सारे कोर्सेज फेसबुक के ऑफिशियल iCode गुरु के फेसबुक ऑफिशियल पेज के ऊपर देख सकते हैं। और iCode गुरु ने रिसेंटली 100+ अवार्ड्स एंड अचीवमेंट्स हासिल किए हैं। ठीक है, जिसके अंदर हैकाथॉन विनर्स हैं और कोडिंग कंपटीशन विनर्स हैं। उसके अलावा iCode गुरु के स्टूडेंट्स ने यूएसए की इंटरनेशनल फुली फंडेड स्कॉलरशिप्स हासिल की हैं। उसके अलावा लोकल एंड इंटरनेशनल इंटर्नशिप एंड जॉब्स, जो iCode गुरु के ट्रेंड स्टूडेंट्स हैं उन्होंने लोकल और इंटरनेशनल जॉब्स हासिल की हैं। थैंक यू। आज का जो हमारा वेबिनार है उसका टाइटल है कैरियर अपॉर्चुनिटीज इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग। जो हमारी स्पीकर हैं उनका नाम है डॉक्टर कलसूम अब्दुल्ला। मैम, डॉक्टर कलसूम अब्दुल्ला इज एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंजीनियर इन बशीर लैब इन द डिपार्टमेंट ऑफ रेडियोलॉजी एट ड्यूक यूनिवर्सिटी, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। शी इज वन ऑफ द टॉप researchers and international weightlifters. So, over to ma'am, Dr. Kalsoom Abdullah. Assalamu alaikum and hello to everybody. Thanks for joining this and coming to hear my part of it, my story, and to give some feedback on this field that I'm in now, say AI, ML, machine learning, and would definitely like to hear from all of you if you have any thoughts or questions on what I present. So let's see, I will start sharing my screen. Oh, there's a question from Muhammad Arsalan. Yes, sorry ma'am, can you speak in Urdu? I apologize, I'm not fluent in Urdu. I know some Pashto, but otherwise it's just English. Okay, thank you. Should I speak
is there any way I should try to speak to help everybody here? As far as the English communication, let me know. So I'll do that while I talk. Okay, I'm not seeing any hands. Ma'am, actually our majority of community is Urdu speaking. So if Okay, yeah, does anyone want to translate while I talk? I could do that. yes, ma'am, can you speak in English? Okay, all right, I'll continue in English. Yes, If thank you. someone doesn't, understand, then just if they can translate that to Urdu. Okay, I'll see, start to share my screen. All right, can you all see a web browser? Yes, ma'am. Okay. All right, so what I'd like to start with is just this definition of what is AI. It's used a lot in the news. People interpret it different ways of what it means, but I like to visualize it as a Venn diagram. So artificial intelligence, this really could be so many things. It's not just data science. It's not machine learning, deep learning only. It could be just things like giving a machine instructions that are rule-based even on how to make a decision to do something. We do this in our coding, when we have our loops and logic to make decisions. Even these things are, you could say they're artificial intelligence, is like telling a computer how to say make decisions or to do things that maybe a human would do. Then this has been around for a very, very long time. It's not something that's a new concept. And then as far as machine learning and deep learning, these would be subsets of artificial. Yeah, somebody messaged me about Pashto, but I think majority is going to know English, so I'll keep going with that. Right, so the machine learning is a subset of artificial intelligence. And I know most of you will know the definition, so I'll only briefly mention that this is where you're saying you want the computer to learn what it needs to do, let's say, or, for example, you have some kind of a model to figure out what weights does it need, what parameters does it need, so that it can best make decisions based on history that you've given it, so that it can make decisions future. So this is a very specific subset of artificial intelligence. And now deep learning is a subset within machine learning, where it's basically the same thing as the machine learning, but now instead of having one level of parameters in which to make a decision, you're now going into more than one level, hence the term the deep. And that's pretty much all that it is. Now in this Venn diagram that I'm showing you, natural language processing is shown here. And it is giving you a good idea. That whole field is a field in itself.
And not all of it is deep learning or machine learning. There's also a lot of it that is just traditional NLP that could be called artificial intelligence. I mean, and this could be a lot of what work you could do if you're interested in text, where you might not necessarily need to do the machine learning or the deep learning training and come up with some kind of a model. You could do some things that are simple rule-based, or things that are actually just in the domain knowledge of whatever language that you're working with to do this language processing. What's not in this Venn diagram could be computer vision. Computer vision is the same thing here as the natural language processing. It's also its own field. And a lot of it is, it's very, it's very old. And a lot of the work that's done in there is also not necessarily machine learning, deep learning. And a lot of problems, though, similarly to natural language processing, can be solved with the deep learning or machine learning. Okay. So as far as further on, what is a AI? Well, before I even talk about job titles and fields, is that this page I'm showing you now, it's just listing some of the many kinds of job titles that there are within artificial intelligence. Now, this field has grown a lot, and companies are realizing that it's not just AI, it's not just data science, that there's a lot of different kinds of skill sets and tasks that are to be done in this field. It's a large pipeline. And so here, this list is showing you some titles like working as a data analyst, there's data scientist, you could be an engineer or a researcher within deep learning and machine learning. Software engineer would be your traditional role that you already know about within, I know what you've already discussed in iCode Guru, like jobs at startups, corporations is where you're going to be coding, and usually those interviews will be the data structures and algorithms. But a software engineer does have some work to do in this AI space. Now, this website, which I'll share, I think this is a good one if you're first starting out or you're not sure what kind of a path you want to take, or if you're even interested in this field. So this, which let me share this with the chat. So I like this site because it gives you information on all of these different kinds of fields and what are the different skill sets that are needed in them. So I think that's really helpful because it can help you to decide what are all your options, what skills do you have right now, and what skills would you want to choose to learn so that you can get into the career that you want to. Because one of the problems with this area is that there's so many languages, there's so many skills, and it's too much. You can't know everything, and you only have so much time and space in your brain to be able to learn something. So it's better to make a careful decision on what you want to choose to learn. So this, and there's other websites out there and guides, but this is one that I can recommend that I've used personally, which I've shared into the space, into this chat. So it also has, in addition to explaining these different fields, it even has these assessment tests that you can take, and it does a best effort to let you know what skills it thinks
based on what you've answered, you're stronger at, which ones, you could work on. And then it will provide some suggestions on places that you can go to try to build up, or resources you can use to learn those skills. So this is one way. Let's see. Yes, and then this report that you can download, it's a nice description of all of these fields. One of the things, though, to keep in mind is I believe this would be more USA based, but from what I have been reading is that other countries around the world are also trying to align with these different kinds of job titles. So just a disclaimer that in Pakistan, the job title might or might not be exactly the same, but then in that case, I would say just focus on the descriptions of these job titles that you're reading about and the skill sets to make sure they match up with the job titles that are used in, say, Pakistan or in other countries. As far as AI now, I've talked about, and what are the different paths that you could possibly take, or categories in there. One article I could share, which it talks about specifically this job title called AI engineer. And I think, again, that if a company has AI engineer as a job title, it could still mean different things. You could be doing the tasks that a machine learning engineer is doing, a data engineer is doing. It's, it's pretty mixed. And I could still share this article because maybe it'll be a little bit helpful. It talks about what are some of the tasks you could be doing, which I just mentioned. It could be from going through the data, cleaning it up and fixing it, which is a part of every one of these jobs, because the quality of your data is very important. Also setting up how your data is being accessed and organized. All of these things are really important to get fixed before you start to do things like trying to come up with models on your data and get results. So I will share. This one, because it still gives you, I think, a pretty good overview. And then here, another section, which I'll talk about now, the term data scientists and data science. That term has been very popular for a while, but there are differences between typically what are the tasks that the data scientist does, what are the tasks that the data analyst does, what do the engineers do? And again, this could be mixed depending on your company. So the data scientist generally is going to be more of the statistics, the SQL, maybe R, maybe the Python to do the statistical results of your data. And then the engineers will usually be doing more of the back end on the data, the coding. So coding is important for everybody, but even more so for the engineer. And when I say coding, I'm talking about the kind of coding that a software engineer would know. And both could be working on the modeling, but the AI or the machine learning, deep learning engineer might be working on deploying these models into a production environment, making sure they work, as opposed to only training on data and coming up with what the model is. Because if you don't already know, is that in real life, it's very different
how a model is going to work and how the data is flowing versus when you're in an isolated environment, like if it's a small data set that you're working with, or possibly in an academic environment. It's very isolated. It's usually very clean data. You don't have a lot of users trying to access the model, things like that. And those are important factors that you also that you consider in traditional software engineering. Okay. And what else I could also talk about now is to share with you some stories. And again, I know I'm a little bit biased with this one website that has provided a lot of course content. And this is here, deeplearning.ai. So they do offer courses. You don't actually have to pay for them. You don't need to get a certificate, which I believe is not important. You can still access them and walk. Hello. Yes. Hello. Someone talking. Okay. Yeah, ma'am, please continue. Okay. So this site here, these stories might be inspirational for you, but what they've done is they've talked to different people in the community of learners, and they really tried to talk to people who did not have, say, traditional backgrounds. Either they could have been in a different career, or they studied a different topic, and then they got interested in either machine learning, artificial intelligence, deep learning, etc. And what did they do to learn and to get the job that they have now, and how, what are some advice that they have for learning. So the reason I'm recommending this is just because I think that when you learn about people who've had struggles and they did not have, the traditional environment of, say, going to university, studying the topic, and then getting a job right afterwards. And they could have also, in these stories, had different life challenges. So I think you could learn from some of these and see what's helpful. And also, a lot of them are not also based in the USA. They are in different countries. So I think this is good. And I've read a lot of these stories. Okay, someone is saying, Adnan Zaidi, we have multiple ambassadors of deep learning AI in KLI, Pakistan. What is KLI? But yeah, that's good that the deep learning AI also has a presence there in Pakistan, because one of the founder of this, who also co-founded Coursera, is Dr. Andrew Ng, and he really does a lot of work to help populations to learn. Okay, I see. So it's not the only resource, but it's one of the ones I can recommend, this deep learning AI. And I think it's a good start. It can help you to figure out what you're interested to. And you could also then go outside of this platform of deep learning AI and look at other resources that are out there for learning. But he actually is also part of the website I mentioned earlier called Workera.ai. And he did that so in his group to help people with
figuring out what skills they need and finding a job. And so if you might already know, since they have a presence in Pakistan, some of the courses that they offer. Now, yeah, and this one you'll see from their website is just, these would be stories of people who are already in the field and some of the work that they're doing. And then also they'll have stories about, one is there about me. They had talked to me about my work story as well, which is the one right here. And they also talk about a little bit about this platform. But now, in addition to, learning and working, in addition to just learning and figuring out your skills, if you're not already in a job, or you're still in school, or you've graduated, what's also really important is to do hands-on work. And that would be, say, doing a project on your own time on data that you can find publicly, or data that you can collect, and then doing an end-to-end project on that, and then putting that, say, on your GitHub, or putting it on if you have a website or a blog or something like that. And then that way you can put that on your resume, and potential employers will be able to look at that and see, okay, this is something that you did. You were able to take data, figure out a story behind it, a problem to solve, and then you did the steps to solve that problem. It's going to show you your communication skills, problem solving skills, and that'll help you with getting job offers and interviews. And also, in addition to that, it's going to help really reinforce what you've been learning in a course or a book, and use all these concepts together. Okay, there's one question which I'll answer maybe after this. I want to ask about how to approach people for a job in a professional way. Yeah, that'll probably be under the networking. But before I talk about that, I wanted to mention one organization, and there might be others in Pakistan too. So, feel free to put that into the chat. One is called Amdana, and they have a few chapters in Pakistan. Let's see. I'm going to pull that up. I had seen that there were 3 of them. And you can also do your own as well. Let's see. And also, to do Amdana, you don't necessarily have to do the one that's in Pakistan. You could be in Pakistan, and you could apply for any of these challenges anywhere. And what the challenges are usually, like, let's say with the one that they had in Pakistan, see, this one started on January 23rd, and actually it was, okay, so this project was about 2 months. So on average, the projects that they'll have that people can volunteer for could range from 1 month to say 2 months. So they're kind of short duration. But one of the advantages for them is that you'll be working with a group of other volunteers together on that task. And then that'll be a way for you to get some hands-on experience. And also you could put this on your resume. So for example, this one that was in Pakistan, is they did have a project that was related to Pakistan. And this was using satellite images. So this is going to be in the category of computer vision.
And they used deep learning to do what's called a task called segmentation of these images. So they trained a model or tried out different kinds of segmentation models to see which could maybe perform best to do this segmentation task. So this is one way, if you, as in joining a group, is one way that you could do some kind of, hands-on work. And let's see, before I go to the questions, one last resource they could share is this is also from the deep learning AI platform. And this is the professor I told you about, that he had founded this organization, and he had co-founded the Coursera organization. So he recently released this book called How to Build Your Career in AI. And so he talks about what I've talked to you about today, but he also talks about the job search. And I'll go over that a little bit right now, just to give you a summary of what's in this book. But here in this learning part, which I've talked to you about today, he briefly talks over about the skills and the learning. And an interesting one is about math. People are, talk about, do you need to know math? Do you need to know the theory? Do you need to know statistics? And the answer is it just depends. And a lot of the jobs, you don't necessarily need to know it that much or that deeply to be able to do the work. And some of the work or jobs that are out there, it might be important to know, but regardless, if you do know it, it could, at least some of it, it can help you with understanding how the models are working, or if you need to debug them. But I would refer you to this article or to the website I've mentioned in helping you to decide how much time you should spend on something like learning math. Okay, someone asked if I could share. Let's see, this link might work. I had to register to get it. All right, there's a few more questions, but I'll get to those after I go through this book. Let's see. So for the projects, that's something I did talk to you about. And so this will guide you on, how can you decide what project to do? And some short answers will be, it depends on what you're learning right now, or what you're trying to learn, and what you're interested in. And that can help you to decide maybe what's a project you could work on right now, and what could be next projects you could do later after more learning. As far as job, this section, again, it could be more USA based, but he does try to describe it more generally, as in, using the same kind of resources like the LinkedIn, or, doing general networking on, finding jobs and finding out, what's a good fit for you, what's a good environment. And then let's see. Yes, the last chapter here, overcoming imposter syndrome. Now, this is, I won't go into it just because of time, but it's a term for when you feel like you don't know enough, or you don't really know what you know. And it can happen, especially to those who really try to do well, or they really, have a desire to learn and know their field very well. And it's when the more you know, the more you realize how much information is out there, and
how much knowledge there is, and that can make you feel like you don't know enough, which is not true. So I think this topic could be something that's helpful either for yourself, or it could be something that you could learn about so you can help others if they're struggling with something like this. Okay, as far as the questions, right, how to approach people for a job in a professional way. Well, the answer is it depends. If you're talking to them in person, or you're having a real-time, conversation, is I would say just to practice, giving a few sentences about yourself, as far as who you are, a little bit about your background, and what you want to do. And if you are approaching somebody that works for a specific company, it's even more helpful to also show that or you've done some research about either that company or the work that they do. And then when you're telling them about yourself, as you could say, here are some of the things your company does I'm interested in. Here are some of the things I think I could help you all out with. And then that shows that you've taken initiative to learn about them and to want to, work for them and to help them. As far as if you're reaching out to them online, similarly is that if you do, say, message them on LinkedIn, is try not to make it too long, but also don't just ask for things. Try to, give some information that you know about them, or about their, their company. If there's job listings, at least say, instead of just saying, could you pass my resume on, you could say, I've seen some of these job listings maybe on your website, and I think I could be a good fit for one of these, and just briefly explain why. So they don't you're not telling them just read my resume and figure it out. Let's see, is data governance a good field for PhD research? It might be. I don't know the answer. I would say, look at some of the resources I've mentioned to you and see what data governance is. See if you're interested in it, and then you can see what could the job scope be for that. I don't know that much about data governance, so I can't answer. All right, somebody asked about AI internship sources. As far as internships, I just know generally one could be LinkedIn for searching, but sometimes because it's an internship, they might advertise to schools or academic communities. So you could try to search those kind of message boards or those job search places to see. All right, someone asked about the skills you need to learn. Right, again, there's a lot of them out there, so I would recommend the website I showed you on figuring out which skills you should learn. But very, very broadly, as I would say, learning about data, coding with data, manipulating it, and usually things like the SQL language so that you know how to access data that are in the databases. And perhaps I would say Python. That I think broadly that seems to be the most popular language across a lot of these fields. But for some of these tasks, like job titles like a data analyst, you might not necessarily need to know Python. Maybe SQL is fine. Starting a career by directly getting into building projects, is that a good strategy?
before doing maths and stuff. Yes, that it could be fine. There are some platforms that teach in this way. One of them is called is it Fast AI? So what this platform does is they have courses, and their model is to go from the top to down, as where you jump into projects, and then you slowly start to learn the understanding behind how these things work. Let's see. All right, someone asked about other ways besides GitHub to show your projects. Sure, I mean, you could put up together a website, say, and use that to show, have your text, have your pictures to describe your projects, and then you could have a link to your GitHub code. But GitHub itself also, I believe, supports this, where it's not just your code, but you could also have pages along with it, like here, to show you something nicer on top of the code. I'm not sure. Okay, these are just listing people. I was going to see if I could show you an example. Yeah, I don't remember the name of what they're calling it. Let's see, I'll try one more before moving on. Right, this is about the code. Let me see, GitHub. Yeah, here's one example. So they're using their actual GitHub account and using what's already built into GitHub to be able to format what their landing page here looks like. And so you can put in something about yourself and a nice description of what's inside of your GitHub. Let's see, someone asked, is a degree in AI important or skills enough for a job? Yeah, I would say skills are going to be enough or even more important than just the degree. And that's usually what employers are looking for, is that if I hire this person, can they get started working on something, and do they have the potential to learn what they need to know for this job? Okay, someone asked, kind of a similar to what I just described, probably, is there a quick way other than GitHub to show competence in first interactions, especially if it's through an online platform? I'm not sure if I understand the question, but I would say you could always just do a blog post to show what you know or to describe a project. Let's see, some asked, will ChatGPT take place of data analysts, data scientists, or software engineers in the near future? My answer is no. I honestly don't think so, because ChatGPT is good for certain things, and it's actually been trained on data up until 2021. So it can't even replace Google because it doesn't have
updated latest information. It's good at writing because it was trained on text and language. So it did learn how to, write articles or essays based on knowledge from 2021 and before. But and you can ask it to say, can you show me code on how to do something? But I've seen that it's not always, it's always accurate. It's not always up to date. So I honestly think, no, it's not going to replace the humans right now. I mean, maybe it will help to replace doing some certain tedious tasks that ChatGPT is good at, but that would possibly be it. Okay, how much experience should we gain in AI ML after the bachelor's and apply directly for a job in the US? Well, I would just say you don't necessarily have to wait and gain experience in working in AI ML before applying. You could always just apply whenever you want to. And yes, the worst case is either you don't hear back from them or, you try and you don't get, the job offer. But it is one way to practice learning how to contact people and telling briefly about yourself and learning about other companies and jobs that are out there. And that process will also just help you to know what are they looking for. You get practice on how to interview. So I would say, depending on your time and your energy level, is if you can, yes, keep learning and practicing, but also sometimes set aside some time to try applying to jobs. All right. Let's see. Someone asked, what level of mathematics would we need for machine learning? Let's see, can you suggest some good sources, if any, to learn mathematics by concept, since we have been learning ad hoc mathematics in Pakistan? So yeah, this again, the level of how much you need to know really depends. You don't necessarily need to know that much to get started on any kind of work. You could always just get started. And this relates to the next two questions, where one was how much calculus is important, how much math is required. So again, it really just depends. But again, you don't need to know that much to get started. And then on some tasks or some jobs, yes, it's going to be helpful for you to know, especially if you want to debug models. And then if you're going to be doing research and publishing papers, like in an academic sense, then you might need to learn more. But I mean, one source, actually there's many, but I'll send the one that I know of now that's very recent. And this is from the Deep Learning AI. And I started looking at it to see how he teaches the material, and it looks like they've done, I mean, I looked at their syllabus and how they're presenting the material, and I think he does a very good job of starting from the very beginning and explaining the math and also telling you why would you need to know these concepts for machine learning. And another, going on the other end of the spectrum, there's a book. Let me pull this up first, and I'll share it with you.
Okay, actually, let me share it on the screen too. Or put it into the chat. But this is a book that if you really want to go deep into the math, this is a good one. But again, you don't need to know what's in this book to get started in this field. But the first part of it goes over on all of the different math topics and probability topics in a theoretical and also problem solving fashion, if you're interested in that. Let's see, questions. Oh, how much skills do you need to become a participant? You don't need that much. I would say just get started and, get started working with data, and refer you to the resources I shared, like the Deep Learning AI website, the Workera, that'll get you started on some getting a good idea on skills and what you can start working on and learning. Let's see, can an AI engineer, ML engineer become a data scientist too, or data scientist has a different track? Yes, you can become a data scientist. It's not a completely different track. Many topics overlap between the engineering and the data science. So you could easily switch to data science if you want to, and pick up some of those topics that don't overlap, like some of the statistics and say SQL. How can we keep updated on new technologies and new methodologies in data science, AI, and deep learning? One I would say is just, following people that are big names in this field on LinkedIn. They will usually share things that they feel that are significant and important. So that can be helpful. And maybe subscribing to newsletters that some of either these big names do or organizations also offer. And also another way is there are podcasts that are free, and you can listen to them, and that's useful for when, say, you're walking, or you're cleaning, or you're cooking. That could be, or you're traveling or something like that. That could be one way to listen and keep up on what's going on out there. All right, how does a senior associate ML engineer skill set differ from a junior's? Well, broadly, I would say a junior most likely will not have worked with big projects, and maybe with other people. And so maybe the senior would have more experience on, working with different people on the different parts of the pipeline. So some of the project organization and management, but again, it just really depends on the company and what the job is. Okay, how can an employer interested in AI development set up good candidates to organize the teams? If you advertise on LinkedIn, how to judge between people responding to the job offer? That one, I guess I would just say this is tough. I mean, one would be, trying the best to go over the resumes and looking at their say GitHub repositories or things that they've shared on their resume to see if it aligns with what you're working on at or you need people to work on at your company.
What I've seen some people do, or organizations, is they'll have, events with prizes, like like a hackathon type thing. And then people can participate in that for the prize. And then that's a way for you to possibly get people to learn about your company data. And because you're offering some kind of a monetary compensation for participating, it gives them that motivation, people to participate. And then those who do well, that you're interested in, you would have a way to know their hands-on skill sets. So that's another idea. And you could also go to these organizations, like say this one with iCode Guru, or places that do either volunteer or paid work on this, on say AI related work, to see who you think would be good candidates, or that would be a good fit in your company. Okay, can you tell us why we need to join this and what this platform gives you special in contrast of another? If you could specify, Aisha, which platform are you talking about, the deeplearning.ai? If so, you don't necessarily, I would say you don't necessarily need to join this one. I mention it because it's one that I know about, and they offered those stories about people getting into AI that you could go over to learn from, to decide what you want to do. And then because I get the question a lot of what do I need to learn to get a job, I mentioned the workera.ai because that's the best one I know of for determining what you know right now and what are different concepts and skills that you could pick up if you want to try to get a certain job. But these aren't the only ones that are available. There's many, many more, and many other resources out there. Sources of these podcasts. Let's see, there's a lot, but let me share the ones that at least I know about. Let's see. There's a lot. I'll just share one website that gives you a list. So let me open that one up, but some of these I haven't listened to yet, but like say AI in business could tell you what is going on with it in different domains. Let's see, Data Skeptic, I've listened to some of those. That's more on specific topics. Let's see. This one, the TWIML AI podcast. This one's pretty good if you want to know about industry, but also what's going on academically. So these are just some of the few that are out there. Let me see, there's another one I just recently learned about. What up? It was, let's see.
Here, I'll share two more. I think one of them might already be in the list. I shared. Oops. This one here, the Super Data Science Podcast. It's, it's another one you could look at. That's pretty good. It's, and he also offers some paid courses. Again, you don't have to take them. I don't think you necessarily need to pay for something to learn from, but these podcasts are free. Let's see. All right, there's more questions. Let me see how, I know it's already an hour, but let me try to answer the ones people have typed in here. How do advancements in AI ML impact the job market, and what kind of job security and stability can one expect in an AI ML career? Well, in industry and job market, I would say the advancements that are made in AI ML don't always go right away to the industry. Usually the advancements are done in a small or specific setting, and it takes time for, say, an industry that doesn't already have that to be able to use it. As far as security and stability in an AI ML career, well, you never know what's going to happen, but I think that from what I'm seeing is that there is a demand and for this, and it's also being adopted in domains like, for example, the one I'm in right now, which is healthcare. Healthcare tends to be behind other industries when it comes to software and technology, and so they need a lot of help. There's many others that are growing, and if, say, worst case, if it's not stable or something happens, you would still have skill sets like coding and analysis that could be used for other types of jobs as well. And it's always important just to keep learning and making sure that you also know your fundamentals really well. So when something new comes out, it won't, and maybe that new thing is temporary. You'll have the fundamental understanding of it, but if something else comes out, you'll be fine because you know your fundamentals. All right, yeah, let me see what I can, all right, as ML, NDL engineer, what's important topics, tools must include in the resume, CV, what skills, focus interview stages. Yeah, that's, again, I'd refer you to some of the resources I shared as specifically for interviewing. Let me see if I can find one that I can remember. So one that I know of, but this is a little bit more on the, what do you call it? Deployment. But it's still a good resource here. So I just shared that. And this lady has a lot, yeah, good information. Let me see. Actually, this link might be a little better. Let me share this one instead.
And okay, and here's one, I just pasted now. So the book itself is not free, but the author shares information on websites that could lead you to other resources, if you're interested in looking further. Let's see. Okay, I've done my thesis in social network analysis of tweets related to some issues. Is there any opportunity for me to continue this research abroad? Yes, I believe so. I'd say, you could apply to graduate schools or PhD programs. And LinkedIn is one way that they'll post, or even Twitter, if research groups are hiring for people to, or say PhD students to do research in those topics. Right, someone asked, should we get the whole idea about AI or getting specialized in some domain? So I don't think it's possible to learn everything about AI. It's a good idea to get a broad overview, and then deciding which domains you're interested in and start learning those. Yeah, LinkedIn, yeah, feel free to connect with me on LinkedIn. I might or might not be able to answer you very quickly, but I'll see if you do contact me, if I can answer or refer you to some resource. Okay, somebody answered the gift question. All right, someone asked about computer vision. Yes, let me pull up what I know. That. Let's see. All right, well, for CV, let me put this in the channel. So I've just shared with you a book. It's a little deep, but the website also shows you other resources such as courses that are online, that you could also look at too for computer vision. Okay, my LinkedIn, if you put in my first and last name, you'll find me. Let me try to answer these questions if we're pulling up. Let's see, one more. Okay, one more question. Any recommendation for research topics for issues in AI algorithms to counter misinformation produced by AI-based algorithms? I don't have particular ones to recommend to you, but I can say that this area is important and popular.
And I would say to follow those people that do the research in this area for those ideas. Let me see if I can pull one up for you now. So with regards to, say, ethics, let me, oops, hold on, share that. So there's this one that I'm gonna put in the chat. And then the other one, yeah, we have a course. So I'm gonna share this one too. All right, and let me find my LinkedIn. All right, it looks like I've answered everything. Please let me know if there's anything else or any other comments or questions, but that's what I've got. Okay, should I Thank- question? Yeah, thank you very much, Dr. Kusum. I'm Dr. Rizwan. I'm here in Bay Area, and I and some of our friends, we are running this iCode Guru. Thank you very much for your time preparing this lecture and giving this informative thoughts. Yeah, it's really great to have you. You have guided our students very well. Thank you very much for your time. Just one comment. Yeah, we know about your professional skills and your professional achievements. Would you throw some light on your achievements in the field of sports that we have learned about, that you have achieved, mashallah, in the field of sports also? So would you throw some light on that? Oh, sure. So let's see with the time. Okay, yes. So I'll briefly describe that, and then if you all are interested, I have a little short video I can play that can visualize my story. But basically, short answer that I started weightlifting. I'm based in the USA. I got good enough to qualify for a USA national competition at that time. And the roadblock that I encountered was what do you call the clothing and being able to compete. And I normally, when I was competing and training, I would, wear pants and long sleeve shirts and headscarf. And so I was being told that for these national competitions, that everybody wears what's called a singlet, which is something that's cut off at, it shows the half the leg and your arms and that kind of thing. So long story short is that they said I wasn't going to be allowed to compete. And then I got other civil rights organizations tried to help me, but they couldn't because the USA Weightlifting was under the Olympic Committee, which was a private organization. It's not a government. And so for something private, you'd have to do a private lawsuit. You can't have a public, NGO government organization help you. So then an organization called the Council of American and Islamic Relations, they said if they could issue a press release about my obstacle. And I said, sure, why not? I don't have anything to lose. And this was in 2011. So when they did that, a lot of the news picked up my story, and I'd say they were a bit fascinated on, there's a Muslim woman who wants to compete in weightlifting, but they're not letting her. What's going on?
And then when I got in the news, then they shared, I mean, this went all the way to the International Weightlifting Federation. And so they said, well, you know, consider this case. And they ended up changing the rules for this. So I'll let me pull up the video and see. So hopefully I can. See, I call it. Okay, found it. This was so I put this video together actually it was about a year ago, but it should still be updated to some extent. And while I'm going to share that, I can also let's see, share with you my social media. So I try to, you know, post some things there about that's related to this, you know, weightlifting stuff. Yeah, sometimes I try for Facebook, so I'll share that as well. Okay. Oops, wrong. Facebook's being a little odd here. Okay. All right, here we go. All right. Yep. Okay, here it is. All right, so now let me get the video started. Actually, before I start, let me stop sharing my screen and I will share the video screen. All right, and let me make sure that the audio, well, actually the audio is not very important. So just let everyone know it's music really, and I have words, so you don't need to hear anything to see this, to understand this video. But I'll go ahead and share computer sound. All right. So I'll go ahead and hit play. Oops. Okay, yeah, and just to update on that, I've moved out of where I was living before, which was Atlanta, Georgia, and now I'm in North Carolina, where I'm working at now with Duke in a radiology lab to do
the machine learning models on medical images. So such could be segmentation and or classification. But I found a gym in the area that seems pretty nice. I started lifting there again. And with the COVID not being so bad, we are able to now train in person. So I'm going to see what happens. I'm really training and doing this for myself now, as opposed to it being a social responsibility task that I felt, back in 2011. So, all right, well, I think that's it for me, unless, there's any other, questions or comments and such. And thanks to everyone for their kind words. Yeah, thank you again, ma'am, for sharing this video. Very inspirational for all of us and very motivating. Mashallah, you have a great journey, and thank you for your time, for enlightening us with your thoughts. Thank you very much, ma'am. Sure. Thank you for having me. Thank you, ma'am. It was great. And thanks for your time. And this is Zafar from Bay Area. And I know it's very difficult to make time for such talks, but hats off to you. Thank you very much. Thank you. Jazakallah. Okay. Thank All you. right. Goodbye. Assalamu alaikum to everybody then. Goodbye. Anyone has some last question? We are here. So regarding iCode Guru, so we can ask those questions. मुझे आइडिया है कि काफी सारे लोग नए थे, तो वो जो है अगर किसी को क्वेश्चन है तो we have few minutes. Please unmute yourself and ask. Hello, am I audible? जी आप audible. Hello. Yeah. So मैं पूछना चाह रहा था कि जो सिस्टम डिजाइन की क्लास हो रही है उसके अंदर करिकुलम का ऑब्जेक्टिव क्या है, फाइनल ऑब्जेक्टिव के कहाँ तक पढ़ेंगे? डिजाइन पैटर्न्स के बाद भी कुछ फर्दर हम स्टडी करेंगे, सिर्फ डिजाइन पैटर्न्स तक ही लिमिटेड? करिकुलम उसका टारगेट ये है कि हमने गूगल में जाना है, हमने उस लेवल तक जाना सिस्टम डिजाइन में कि जब हम गूगल का सिस्टम डिजाइन का इंटरव्यू दें तो वी आर कंपेटिटर, वी हैव अ गुड चांस ऑफ सक्सेस। तो अभी डॉक्टर रेहान से लीड कर रहे हैं क्योंकि वो खुद भी गूगल की प्रेपरेशन कर रहे हैं। अभी डॉक्टर हसन ने हमें ज्वाइन किया है यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल फ्लोरिडा से, तो ही हैज द सेम एम्बिशंस। तो मैं भी उन क्लासेस में आता हूँ मोस्टली। तो वी हैव वेरी क्लियर करिकुलम कि हमने गूगल लेवल पे जाना है। राइट, टॉपिक कोई भी हो सकता है। राइट। और इनको टीच कौन करेंगे? अभी जो इंस्ट्रक्टर कौन है? डॉक्टर रेहान है मिशिगन से, डॉक्टर हसन है सेंट्रल फ्लोरिडा से, मैं भी आ जाता हूँ कभी कभार। तो बेसिकली हमारा टीचिंग प्लेटफॉर्म नहीं है, हमारा क्राउड लर्निंग प्लेटफॉर्म है। तो वी एक्सपेक्ट द participants to come forward and share their knowledge. ये प्लेटफॉर्म फ्री है आपका क्या? जी 100% फ्री है। सर एक चैट में क्वेश्चन है, just confused in this world nothing is free, how iCode Guru teachers support us, just confused, do not mind, thanks। तो भाई वो जो है जिस तरह काफी सारे लोग पाकिस्तान में बैक होम अपने इंस्टीट्यूशन की हेल्प करते हैं, कंट्री की हेल्प करते हैं, पैसे देते हैं। आपको पता है जो पाकिस्तान चल ही रहा है वो ओवरसीज के पैसों पे चल रहा है इस वक्त। तो दिस इज अवर वे ऑफ पेइंग बैक टू द कंट्री। हमारे ख्याल में ये सबसे आसान तरीका है पाकिस्तान को फाइनेंशियली सेल्फ सफिशिएंट बनाने का कि हम अपनी यूथ को एम्प्लॉयबल कर दें इंटरनेशनल लेवल पे। राइट, तो उसके लिए हम हर वो काम करते हैं। वी आर नॉट गोइंग फॉर अ शॉर्ट गोल, वी आर गोइंग फॉर अ लॉन्ग गोल कि हमारी यूथ को इंटरनेशनल स्कॉलरशिप्स मिलें, जिस तरह भी हमारे स्टूडेंट्स को पिछले 2 सालों में मिले हैं। और हमारे भी 2 स्टूडेंट्स जिन्होंने डिग्री कंप्लीट की है तो उन्हें $100,000 से ऊपर की जॉब्स भी मिल गई हैं।
So basically, we are not doing it for some revenue generation or some business purposes. तो हमारा जो कैरियर सर्विसेज का सेशन है वो हर सैटरडे को 5 PM पे। आप इसके हवाले से थोड़ा गाइड करेंगे, मतलब फ्रॉम स्टार्ट टू द एंड के मतलब क्या क्या हो क्या रहा है आई कोड गुरु का? आई कोड गुरु पे हर वो चीज हो रही है जो आपको इंटरनेशनल लेवल का प्रोफेशनल बनाएगी। कि आप अगर एप्पल में इंटरव्यू देंगे तो देयर विल बी अ गुड चांस सक्सेस, क्योंकि हम सिलिकॉन वैली से चला रहे हैं इसको। तो दिन में 6 क्लासेस होती हैं, तो मुख्तलिफ क्लासेस में आए, वो सारे टॉपिक आपको कवर करने हैं। तो मेरा ख्याल है कुछ महीनों में स्टूडेंट तैयार हो जाता है। और परी रिक्विजिट कोई नहीं है, इंग्लिश आने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। ये मत सोचेंगे मैं पहले इंग्लिश इंप्रूव करूंगा। तो हम बेसिकली आपका प्रोफाइल इतना स्ट्रॉन्ग करते हैं कि जब कोई प्रोफेसर, कोई एम्प्लॉयर आपका CV देखे तो उसका माउस क्लिक होना बंद हो जाए, वो आपको इग्नोर ना करे, उसे लगे ये पोटेंशियल कैंडिडेट है। फिर अगर वो इंटरव्यू करे तो आप एज कंपेयर टू अमेरिकन, यूरोपियन, इंडियन कैंडिडेट्स से ज्यादा बेहतर लगे। फिर जब आप जॉब या यूनिवर्सिटी ज्वाइन करें तो आप एक्चुअली भी अच्छा परफॉर्म करें। तो हम ये सारे एस्पेक्ट्स कवर करते हैं आई कोड गुरु के ऊपर। इसीलिए हमारा प्रोग्राम काफी इंटेंसिव है कि हम दिन में 6 घंटे लगाते हैं ताकि इसकी कोई आउटकम आए। अगर हम 3 महीने बाद एक वेबिनार करवा देंगे किसी लेटेस्ट टॉपिक पे तो उसका फायदा नहीं होता, क्योंकि एफर्ट बहुत थोड़ी होती है। सर इसमें प्रैक्टिकल का क्या सिनेरियो होता है, क्योंकि ये तो ऑनलाइन चल रहा होता है, तो फिर प्रैक्टिकल कैसे परफॉर्म होते हैं? हम काम ही प्रैक्टिकल करते हैं, हम बातें नहीं करते। मतलब आप हमारे फेसबुक पे हमारे पुराने लेक्चर्स पढ़े हैं रोज के। अब ये टॉपिक हो रहा है ये भी फेसबुक पे जा रहा है लाइव, तो फेसबुक पे हमारी सारी पुरानी क्लासेस पढ़ी हैं, आप जाकर देख सकते हैं कि हम क्या कर रहे हैं। अच्छा, इसके सर रिसर्च साथ यूनिवर्सिटी अभी आपने स्टार्ट किया? सर जी रिसर्च फोकस में ग्रुप है अभी तक हमारे पास या नहीं? जोर से बोलें, जरा आवाज नहीं आई आपकी। सर मैं पूछ रहा हूँ कि रिसर्च फोकस कोई ग्रुप है हमारे पास इस प्लेटफॉर्म के अंदर? रिसर्च हम स्ट्रांगली बिलीव करते हैं। यहाँ मैं बैठा हूँ, डॉक्टर रिजवान बैठे हैं, तो हमारे अगर आपको कोडिंग नहीं आती तो आप कभी भी अच्छे रिसर्चर नहीं बन सकते। तो रिसर्च का मुझे काफी सारा आइडिया है। हमारे जितने स्टूडेंट्स बाहर गए हैं, किसी की भी पब्लिकेशंस नहीं थी जिन्होंने PhD में स्कॉलरशिप लिया है। तो बेसिकली उस लिहाज से हमारा रिसर्च का फोकस ग्रुप नहीं है। और क्या कहते हैं, वी अंडरस्टैंड कि रिसर्च क्या चीज होती है, तो हम उसको उस लिहाज से गाइड करते हैं, जो कि थोड़ा सा डिफरेंट है। थैंक यू। जी अब्दुल रहमान नाम का क्वेश्चन। सर डिटेल्ड इंफॉर्मेशन के लिए फिर आपकी वेबसाइट पे है सारी इंफॉर्मेशन डिटेल, अगर हम और लेना चाहें इसके हवाले से? जी बिल्कुल, आप वेबसाइट पे जाएं, ज्वाइन नाउ का बटन दबाएं, फिर आपको स्लैक का लिंक आएगा। स्लैक पे हम सारे स्टूडेंट्स हैं, स्लैक पे भी हमारे 7000 स्टूडेंट्स हैं। स्लैक पे ही हम जूम के लिंक शेयर कर रहे होते हैं, स्लैक पे ही सारा दिन बहस हो रही होती है, स्लैक पे ही लोग एक दूसरे की हेल्प कर रहे होते हैं। तो अवर मेन चैनल, अवर मेन कम्युनिकेशन इज ऑन स्लैक। 99% कम्युनिकेशन। व्हाट्सएप पे हम सिर्फ अनाउंसमेंट करते हैं हफ्ते में 1-2। तो स्लैक पे ही हम बताते हैं कि अच्छा कौन कौन से इंटरनेशनल इवेंट्स आ रहे हैं, उनमें जाना है। स्लैक पे ही स्टूडेंट बोल रहे होते हैं कि मुझे इस प्रॉब्लम में हेल्प चाहिए, मैं यहाँ फंसा हुआ हूँ, एनीबॉडी इज हियर टू हेल्प अस। और सर और उसे आप स्लैक को ज्वाइन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट से। मैं फाइनल ईयर स्टूडेंट हूँ, तो मैं लेट तो नहीं हूँ इस प्रोग्राम के अंदर? मैं अब बिल्कुल लेट नहीं है। मैंने ये प्रोग्राम, मैंने जब सीखना चीजें शुरू की थी तो मुझे कैरियर में 15 साल हो गए थे, तो आप बिल्कुल टाइम पे। अस्सलामुअलैकुम सर, मुझे ज्वाइन करना था स्लैक पे। तो अब ये है कि मैंने 2 दिन से रिक्वेस्ट की हुई थी आपकी वेबसाइट पे, बट मुझे अभी तक कोई कंफर्मेशन ईमेल नहीं आई। 2 दिन हो गए। आप उसी पे ही उसी वेबसाइट पे ही जी उसी वेबसाइट पे ही फीडबैक का भी एक बटन है। फीडबैक को क्लिक करें और वहां पे क्या कहते हैं, कंप्लेन करें कि जी मैंने ज्वाइन के लिए फॉर्म फिल किया हुआ है, मुझे 2 दिन से रिस्पॉन्स नहीं आया। तो वो जो आपकी कंप्लेंट है वो हमारे जो ऑर्गेनाइजर्स हैं उन तक पहुंच जाएगी और वो उसे प्रॉपरली बड़ी सीरियसली लें। ठीक है। ओके।
इस प्लेटफॉर्म पे थोड़ा सा स्टडी डिफरेंट है, या ये भी दूसरे लोगों की तरह ही है कि ठीक है यार थ्योरी पढ़ लो बस, आए ना आए, दैट्स इट? हम इससे बिल्कुल डिफरेंट है, 100% डिफरेंट है। लाइक ये जो रिसर्च पेपर लिखते हैं वो इधर से कॉपी पेस्ट करके कर देते हैं, तो हमारे सिस्टम में कैसे होता है? हम बिलीव करते हैं कि रिसर्च इज वेस्ट ऑफ टाइम, तो हम रिसर्च नहीं करते। हम आपको इस काबिल बनाते हैं कि आप गूगल में सालाना $1 करोड़, सालाना कितने, 3 लाख डॉलर की, या महीने की 1 करोड़ रुपए की जॉब ले सकें। हम रिसर्च नहीं करवा रहे, हम काम करवाते हैं। तो मैं अभी दुनिया की 5 टॉप की रिसर्च लैब्स को खुद फंडिंग दे रहा था रिसर्च के लिए। मैं उनसे मंथली मीटिंग करता था स्टेटस अपडेट के लिए। तो काफी अच्छा आइडिया है हमें यहाँ पे कि हाउ मच रिसर्च वी नीड। तो हम रिसर्च नहीं करते, हम काम करते हैं, प्रैक्टिकल काम। तो जिस तरह गूगल में 2 लाख लोग हैं, उनमें से जो रिसर्चर हैं वो शायद 500 से भी कम होंगे। तो हम 2 लाख नौकरियों को टारगेट कर रहे हैं गूगल की। जिस तरह या अमेजोन में 20 लाख लोग हैं, तो हम 20 की 20 लाख को टारगेट कर रहे हैं कि उन सब नौकरियों के लिए आप कैपेबल हो। तो उन नौकरियों का रिसर्च से कोई लेना देना नहीं। तो रिसर्च बेसिकली हमारे जो मोस्टली स्टूडेंट्स का कैरियर में प्रॉब्लम्स हो रही हैं, वो बेसिकली हो रही हैं रिसर्च से और रिसर्च पेपर पढ़ने से। ये मैं आपको बड़ी वही तो हम जिम्मेदारी कह रहे से हैं बताऊं। कि सर्च करते रहते हैं, उसकी आउटपुट कुछ नहीं आती, ना वो कुछ बना सकते हैं, ना कुछ, ना उनके पास अपनी कोई स्किल होती है। सर आप हमारे प्लेटफॉर्म पे 2 महीने बाद आए तो आप अमेरिका से नीचे की जॉब की बात ही नहीं करेंगे। अच्छा, ये मैं रिसर्च के बारे में थोड़ा सा ऐड करूंगा कि मतलब रिसर्च अच्छी चीज़ है, मतलब जाहिर बात है चीज़ें बन रही हैं और ये जो लोग रिसर्च कर रहे हैं वही चीज़ों को आगे लेके जा रहे हैं। लेकिन हम जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की बात करते हैं तो उसकी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कम है। ठीक है, अब हम हमारी कंपनीज में भी रिसर्च डिविजन्स होते हैं लेकिन वहां पर आप जब आप रिसर्च डिवीजन में जॉब शुरू करते हैं ना, एक प्रोडक्ट कंपनी में, जो कंपनी एक प्रोडक्ट बना रही है वो चाहती तो है रिसर्च करना, ठीक है, वो चाहते हैं कि वो कटिंग एज में जाए। लेकिन जो रिसर्च डिवीजन होता है, एक तो ये छोटा होता है, ठीक है, और दूसरा जब कंपनीज अपना एक्सपेंडिचर कम करने की कोशिश करती हैं तो सबसे पहले रिसर्च डिवीजन को कट करती हैं। ठीक है, तो जब हम मतलब ऐसा नहीं है कि रिसर्च अच्छी चीज नहीं है, लेकिन जब हम जॉब अपॉर्चुनिटीज की बात करते हैं ना, तो रिसर्च में जॉब्स लिमिटेड हैं थोड़ा, और जॉब सिक्योरिटी कम है। ठीक है, और आपने उन जॉब्स लेने के लिए सिर्फ नॉर्मल रिसर्च नहीं करनी होती, मतलब जो कंपनीज फिर जो रिसर्च इंजीनियर्स हायर करती हैं वो अपनी फील्ड के टॉप नॉचेस होते हैं। वो लोग वहां पर, आप जैसे आप गूगल का एक रिसर्च डिवीजन है, आप वहां पर जाकर देखें ना, आप कौन कौन लोग वहां पर होंगे। ठीक है, वो लोग नॉर्मल रिसर्च नहीं है जिन्होंने एक पीएचडी की, 10 पेपर्स पब्लिश किए और वो गूगल में एज ए रिसर्चर हायर हो गए। वो लोग हैं जिन्होंने हायरिंग होने से पहले ही एक ब्रेक थ्रू अचीव किया हुआ है, वो लोग वहां पर आते हैं। तो रिसर्च बहुत एक अच्छी चीज है, लेकिन हम चूंकि जॉब अपॉर्चुनिटीज की और वाइड स्केल की बात कर रहे हैं, तो वहां पर इसकी जो अपॉर्चुनिटीज हैं थोड़ी सी लिमिटेड है। ठीक है, अच्छा, थैंक यू। मतलब हमारा जो प्लेटफॉर्म है ये स्किल सिखाता है और उस स्किल की इम्प्लीमेंटेशन भी सिखाता है। जी बिल्कुल, हम ज्यादा फोकस उन चीजों पर करते हैं जो कि प्रोडक्ट्स में काम आते। देखिए ना, अभी आप आज एक प्रोडक्ट बना रहे हैं, ठीक है, उसमें क्या चीजें यूज होनी है, ठीक है, वो प्रोडक्ट मेंटेन किस तरह होना है, वो प्रोडक्ट डेवलप कैसे होना है, तो वो स्किल सेट जो चाहिए वो है जिसके जिसकी आज आप देखें 100,000 जॉब्स होंगे। ठीक है, जबकि आप रिसर्च डोमेन में जाएंगे तो उस वो रिसर्च जो कि 2030 के प्रोडक्ट्स में आनी है, उसमें उसकी कितनी जॉब्स होंगी, 1000 जॉब होंगी। ठीक है, तो वो एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। मतलब हम ये नहीं कहते रिसर्च अच्छी चीज नहीं है, बिल्कुल है, मतलब आखिर अगर ये रिसर्च ना हो रही हो तो हम तो आगे जा ही ना सके, हम तो प्रेजेंट प्रोडक्ट्स पे ही रहें। लेकिन हमने ये देखना है कि कौन सा है फील्ड जहां पर जॉब अपॉर्चुनिटीज ज्यादा है, जहां पर हम एक्सेल ज्यादा कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसा मैं आपको बता रहा हूँ, हमारी जो प्रोडक्ट कंपनीज में भी ना, जो रिसर्च फील्ड है उसमें लोग बहुत ज्यादा नहीं जाना चाहते हैं, क्योंकि उसकी एक वजह उन्हें पता है कि वहां पर इतनी ज्यादा जॉब सिक्योरिटी नहीं है।
ठीक है, कंपनीज ने अपना एक्सपेंडिचर, कभी आजकल रिसेशन के रूमर्स हैं और कंपनीज अपना एक्सपेंडिचर कम कर रही हैं, तो वो किन लोगों को ले ऑफ करेंगी? क्या आपको उन लोगों को ले ऑफ करेंगी जो इस साल के प्रोडक्ट पे काम कर रहे हैं, या उन लोगों को ले ऑफ करेंगी जो 2030 के प्रोडक्ट्स पे अभी आइडियाज दे रहे हैं, मतलब अभी काम कर रहे हैं लेकिन अभी उनके आइडियाज हैं, ऐसा नहीं है कि वो प्रोडक्ट उन्होंने काम शुरू कर दिया। तो उसमें ऑफ कोर्स वो 2030 2040 वाली टीम्स पहले अफेक्ट होती है। सर ये हम साइबर सिक्योरिटी पे भी काम कर रहे हैं, ताकि मतलब ये भी बड़ा हॉट एरिया है, तो हम चाहते हैं कि इसको भी लर्न करें। जी हमारी 6 PM पे रोज क्लास होती है उसकी। और इसे अगेन रोज 6 बजे क्लास होती है उसकी। एज पर पाकिस्तानी टाइम? जी हम पाकिस्तानी प्लेटफॉर्म में। थैंक यू। Anyone can enroll in multiple courses? जी जी भाई, आप हमारा प्लेटफॉर्म जो iCode गुरु है उसका स्लैक चैनल iCode गुरु की वेबसाइट से जाके ज्वाइन करें, तो आपको ईच एंड एवरीथिंग की इंफॉर्मेशन स्लैक पे मिल जाएगी। हर चीज टोटली फ्री है, जितने मर्जी कोर्सेज लो। कोर्सेज की कोई एनरोलमेंट नहीं है, मतलब बेसिकली ये जूम लिंक्स हैं, हर रोज क्लास होती है, अब जब चाहें आए, मतलब रिकमेंडेड है आप हर क्लासेस को रेगुलरली अटेंड करें। अगर किसी वजह से आप नहीं अटेंड कर सकते तो उसकी रिकॉर्डिंग होती है फेसबुक पे, आप वहां जाकर देखें। लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई अटेंडेंस नहीं है, कोई एनरोलमेंट नहीं है, कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है। आप आए, अटेंड करें, आपको अच्छा लगता है कंटिन्यू करें। लेकिन इन द एंड मतलब हमने अभी तक देख लिया है कि वो लोग सक्सेसफुल हो रहे हैं जो कंसिस्टेंट हैं। कंसिस्टेंसी चाहिए, वो हम बिल्कुल आपको रिकमेंड करेंगे। आप आए, क्लासेस लें, आहिस्ता आहिस्ता आप सीखना शुरू करेंगे। और ये मतलब ये क्लासेस ऐसी नहीं है कि आपने 1 घंटा, आप 1 घंटा आगे तो आप 1 घंटा कुछ कर नहीं सकते। जूम क्लास है, आप अपना कोई और काम कर रहे हैं तो करते रहें, साथ साथ इसको साथ साथ सुनते रहें, और आहिस्ता आहिस्ता आप ना चीजें डेवलप करनी शुरू कर देंगे। बेहतर तो यह है कि आप फोकस करें, लेकिन फर्ज करें अगर आपके पास टाइम नहीं है, आप किसी और चीज में बिजी हैं, घर पे हैं, कहीं बाहर जा रहे हैं, लॉग इन कर लें, सुनते रहें। ठीक है, जितना आप रेस्ट कर सकते हैं करें। और वो कोर्सेज मल्टीपल दफा रन हो रहे होते हैं ना, तो अगली दफा कोर्स में आपको मजीद चीजें समझ आएंगी। तो इस तरह करके आप जरूर ज्वाइन किया करें ये कोर्सेज, और देखें कि यहाँ पर लोग क्या बात कर रहे हैं। जी मैम, मैम फातिमा नूर आपका हैंड रेज है, अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। No, sir, I have no question. इट्स ओके। अच्छा, अगर किसी का और कोई फॉलोअप क्वेश्चन है तो प्लीज यू आर मोर देन वेलकम टू आस्क इट, अदरवाइज वी कैन कंक्लूड दिस सेशन हियर। सर सर मैंने पूछना था कि लाइक मैं अभी फ्रेश ग्रेजुएट था, तो मुझे एक पाकिस्तानी लाइक जो सॉफ्टवेयर है वहाँ भी जॉब ऑफर हुई थी, तो हवावे में भी हुई थी, तो मैंने अभी हवावे ज्वाइन की है। लेकिन वहाँ जो चीज़ मैंने ऑब्जर्व की है कि वहाँ उनकी सारी टेक्नोलॉजी अपनी है। तो ऐसी कंपनी में लाइक मजीद काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, जिनका लाइक सारा इकोसिस्टम ही अपना है? थैंक यू। थोड़ा सा आप दोबारा बताइएगा कि क्या ये हवावे में आपने जॉब शुरू की, तो वहां आपने क्या ऑब्जर्व किया कि उनका लाइक वहाँ मैंने ऑब्जर्व किया कि उनका सारा सेटअप, उनके सारे टूल्स, उनकी सारी टेक्नोलॉजी मतलब अपनी है।
लाइक जैसे हम दूसरी चीज़ें या टूल यूज़ करते हैं उनका सारा कुछ डिफरेंट है, तो ऐसी कंपनी में काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? देखिए, कंपनीज जो हम इस प्लेटफॉर्म पे कोशिश करते हैं ना, वो तो हम आपको एक जनरल सॉफ्टवेयर इंजीनियर की जो स्किल्स हैं वो इम्पार्ट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, जब आप किसी कंपनी में जाते हैं तो किसी टीम में जाते हैं तो ठीक है, वहां पर उनके टूल्स डिफरेंट हो सकते हैं। ठीक है, इवन मतलब आप ट्विटर चले जाएंगे तो ट्विटर पाइथन में काम नहीं कर रहा, राइट? ट्विटर C++ में भी काम नहीं कर रहा। ठीक है, तो आप गूगल चले जाएंगे, उनकी भी डिफरेंट प्रोडक्ट्स वो डिफरेंट लैंग्वेजेस और टूल्स में काम करेंगे। तो मेरा, अगर आप जॉब कर रहे हैं तो जॉब मेरा नहीं ख्याल इस बेस पे छोड़ देनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए कि उनके टूल्स डिफरेंट हैं। टूल्स तो आप देखें, अगर आपके पास बेसिक प्रोग्रामिंग स्किल्स आपको आती हैं तो कोई भी टूल सीखना, कोई भी लैंग्वेज सीखना आसान हो जाता है। ठीक है, अब इस बेस पे मैं कोई जॉब नहीं मुझे छोड़नी चाहिए कि यार ये तो PHP में काम कर रहे हैं। ठीक है, अगर आप एक जॉब कर रहे हैं और आप उन टूल्स से आप फेमिलराइज हो जाएंगे और ये टूल्स इन द एंड आपको हेल्प करेंगे, राइट? इसमें मैं तो नहीं समझता कि सिर्फ टूल्स की बेस पे आप समझें कि नहीं वे कोई बहुत अच्छी जॉब नहीं है। लेकिन जो हम बेसिकली कोशिश यहाँ पर करते हैं वो ये है कि जो आपकी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग स्किल्स हैं उनको बेहतर किया जाए। और ये जो बड़ी कंपनीज हैं और जो यहाँ पर हम US में ट्रेंड देखते हैं, ये लोग आपकी बेसिक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग स्किल्स चेक करते हैं, ये लोग टूल्स चेक नहीं करते। ठीक है, आपको टूल आते हैं या नहीं आते, ये आपका कोई प्लस या नेगेटिव पॉइंट नहीं होता। इन्होंने आपकी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग स्किल्स चेक करनी होती है कि आपको डाटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम्स आते हैं, ये चीजें आती हैं, तो उन पे आपको फोकस जॉब सर्च में और उनको अपनी जिंदगी में आपको फोकस करना चाहिए। और फिर आप जहाँ भी जिस भी एनवायरनमेंट में जाते हैं उनके अपने टूल्स होते हैं, उनकी अपनी लर्निंग एनवायरनमेंट्स होती हैं। अगर आप एक अच्छे, अगर आपकी बेसिक्स स्ट्रांग हैं तो आप वो चीजें जल्दी पिक कर लेते हैं। ओके सर, थैंक यू। चलिए ठीक है, चलिए मोहम्मद अला, मेरा ख्याल है अब 10 बजने वाले हैं, लेट्स क्लोज इट नाउ। Yes, sir. ठीक है, Thank you so much, everyone, for joining this session, and thank you so much, Sir Rizwan, Sir Zafar, Sir Kaleem, and Ma'am Kulsum, for your valuable thoughts and sharing the knowledge with us. If no one has any more questions, then we can just end this session here, and inshallah मंडे से हम दोबारा जो है वो स्टार्ट करेंगे। बल्कि संडे को भी, कल भी एक वर्कशॉप है, तो बी श्योर कि आप उस वर्कशॉप को भी अटेंड करें। तो थैंक यू एवरीवन, अल्लाह हाफिज। थैंक यू, अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम जी, कैन आई आस्क वन क्वेश्चन? जी सर, श्योर। जी बताइए। We have been trying, we are a business, and हम लोग we are working in certain defense related sectors. हम लोग काफ़ी, मैंने कोशिश की एक दफ़ा टीम बनाने की, because we need I'm not a software person, so I wanted to organize a team जो इस कुछ areas में हम काम करना चाह रहे थे, but it is very difficult for somebody who's not a software background का to identify people. मैंने कुछ लोग hire भी किए, but unfortunately it was a bad experiment. So how does one, मैंने पहले भी question डॉक्टर कलसूम को भी किया था कि how do you find the right resource? What आपका उस पे कोई गाइड कर सकते हैं? आपको बेसिकली सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स चाहिए, राइट? यू वांट टू डेवलप सम नहीं, एआई रिलेटेड जी, हम बेसिकली कंप्यूटर विजन एंड कंप्यूटर विजन के हमें ज़्यादा काम है, उसको हमने एआई रिलेटेड करना चाहते हैं। सो हाउ डू यू फाइंड द राइट रिसोर्स जो उस पे एक टीम डेवलप कर सके और प्रोडक्ट्स डेवलप कर सके? अच्छा, इसके लिए जो थोड़ा सा मुझे पता है कि जब आप इस तरह का कोई सेटअप शुरू करना चाहते हैं ना, सो यू नीड वन पर्सन जिसको वन पर्सन, सेटअप का पता है। पर्सन चाहिए होता है जो सारी चीज को चला ले, बट वो बंदा कैसे मिले? बिल्कुल,
हाँ बिल्कुल, एंड देन ही फाइंड्स द टीम। तो आपका अब चूंकि बिकॉज यू आर लीडिंग दिस एफर्ट, तो आपका काम टीम बनाना नहीं है, आपका काम उस एक बंदे को आइडेंटिफाई करना है कि हु इज द राइट पिक जो कि अपनी टीम मैंने बना सकता है। लिंक्डइन पे ऐड दिए जी, मैंने कोई 50 लोगों के इंटरव्यूज किए, PhDs के इंटरव्यूज किए, आई शॉर्टलिस्टेड 2-3 पीपल। अनफॉर्चुनेटली वो इट वाज मैंने उनको हायर भी कर लिया, एंड साल 1.5 साल मैंने एक टीम बनाई भी, और मैंने इस पर काफी ज्यादा पैसा जाया भी किया, बट इट वाज लोग एक्चुअली हमारे पाकिस्तान में प्रॉब्लम ये है, आई डोंट नो आप लोग ये शायद देख भी रहे होंगे कि लोग ना अपने आप को गलत प्रोजेक्ट करते हैं, और शायद अगर अगला बंदा खुद उस डोमेन का ना हो, वो उसको कुछ 6 महीने बाद पता लगता है कि जो बातें वो कर रहे थे वो सारी गलत थी। दैट इज करेक्ट, ये आप सही कह रहे हैं। लोग मतलब ये पाकिस्तान ओवर में प्रोजेक्ट नहीं, करते हैं ना, ओवरऑल वो है कहते कि हैं हमें ये भी आता है, ये भी लोग आता है, हम ये भी सीरियस हैं, हैं। हम ये भी कर लेते हैं, ये भी कर लेते हैं, बट एक्चुअली 6 महीने बाद पता लगता है कि वो जो बातें कर रहे थे वो सारी हवा में थी। दैट इज करेक्ट, दैट इज करेक्ट। हाँ, उसके लिए मतलब आपको जो एक बंदा ढूंढना है, यू नीड वन टीम लीड, राइट? उसके लिए तो ये है कि वो उस टीम लीड को सही आइडेंटिफाई करना जरूरी है। उसमें थोड़े से चैलेंजेस होते हैं, सारी बात है। जो अच्छे लोग होते हैं वो ऑलरेडी कहीं अच्छी जॉब्स पे होते हैं, वो या अच्छी जॉब पे होते हैं, या अच्छा दे आर काम कर रहे इंटरेस्टेड टू होते हैं। एस्टैब्लिश देयर ओन बिजनेस, दे आर नॉट विलिंग टू वर्क। या बिल्कुल, दैट दैट इज एन इशू। और क्योंकि पाकिस्तान में हम इस प्लेटफॉर्म पे यही कोशिश कर रहे हैं कि टैलेंट को ज्यादा टैलेंटेड लोग हो, ज्यादा पूल हो जिनसे आप लोग सेलेक्ट कर सकें, राइट? अभी आपका तो ये एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम है, लेकिन यही लोग कहते हैं कि हमें अच्छे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स नहीं मिलते, राइट? तो मतलब उनके पास टीम भी है, उनके पास लोग भी हैं जो आइडेंटिफाई कर सकते हैं, लेकिन जब आप इंटरव्यूज करते हैं सो यू डोंट फाइंड पीपल जो के क्वालिफाई कर सकें। और इसी वजह से मतलब देखें ना, यूएस में इट्स जो यहाँ के इंटरव्यूज होते हैं बड़े, आई डोंट नो हाउ डू यू इंटरव्यू, लेकिन यहाँ पर मल्टीपल डेज, 1 डे 2 डे इंटरव्यूज होते हैं, मल्टीपल 6 6 7 7 सेशंस होते हैं, राइट? और विच विच इज विच इज डिफरेंट। मतलब मैं यूरोप में भी रहा हूँ, यूरोप में इस तरह नहीं होता। यहाँ पर तो जब हमारे अभी भी हम इंटरव्यू देते हैं तो वी स्टैंड ऑन द वाइट बोर्ड, राइट? इतना एक्सपीरियंस है, सारा कुछ है, दे स्टार्ट आस्किंग बेसिक क्वेश्चंस। वो तो आपसे हमसे कॉम्प्लिकेटेड चीजें नहीं पूछते वो, they ask basic questions algorithm के, कोडिंग के, and they try to see कि आपके बेसिक कितनी स्ट्रांग है। तो आपके केस में ये है कि चले हम देखते हैं कि कोई आपको ऐसा रिसोर्स दिया जाए जो आपको आइडेंटिफाई कम से कम कर सके कि हु कैन बी द टीम लीड। जो आपको टीम लीड आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकें, मैं दिस टू इज बी द की है। ऑनेस्टली मैंने 19 में आई पेड टॉपटेल टू फाइंड मी अ टीम। मैंने एक ग्रीक और एक इजिप्शियन को हायर किया टू फाइंड अ टीम फॉर मी। उसके बाद हम 6 महीने इंटरव्यूज करते रहे, मैंने 20 लोग हायर किए। वी वांटेड टू क्रिएट, मेरा यही पॉइंट था कि एक हम प्लेटफॉर्म क्रिएट करें जिधर टॉपटेल टाइप, जहां हम पाकिस्तान में लोगों को सिलेक्ट करके उनको आगे प्रोजेक्ट करें। आई वर्कड ऑन दैट प्रोजेक्ट फॉर अबाउट 2 years। उसके बाद वो ग्रीक जो था वो अगेन 2 नंबर निकला। इजिप्शियन जो था वो छोड़ के चला गया यूएई। फिर मेरे पास जो टीम थी उसमें से कुछ बंदे अभी अमेरिका चले गए हैं, जो उसमें मैंने एआई वगैरह भी रखे थे। वो वी केप्ट ऑन वर्किंग उसमें डायरेक्शन, वी कुडंट फाइंड अ डायरेक्शन। जो मैं उनको कहता था वो पीपल कुडंट अंडरस्टैंड व्हाट आई वाज सेइंग, बिकॉज वी आर सो यूज्ड टू बीइंग गिवन वेरी पर्टिकुलर टास्क। मैं उनको कहता था मेरा ये कॉन्सेप्ट है, इसको आप वो करें, सो दे कुडंट अंडरस्टैंड दैट। फिर आई अगेन गिव एन एड, उसमें फिर काफ़ी सारे PhDs को इंटरव्यू किया। मैंने एक ऑस्ट्रेलियन पाकिस्तानी हु हैड स्पेंट अबाउट 20 years इन ऑस्ट्रेलिया, उसको हायर कर लिया। Again he couldn't do it, and eventually after about a year and a half or 2 years I closed the project as a bad job. ठीक है, चले आप इस तरह करें, आप हमारा प्लेटफॉर्म ज्वाइन करें, उस पर आप पिंग करें, एंड लेट्स सी इफ वी कैन फाइंड समवन हु कैन हेल्प यू इन आइडेंटिफाइंग अ टीम लीड। चलें ठीक ये है। एक प्रॉब्लम सर है बिल्कुल जो। सर इसमें अगर मैं एक छोटी सी बात ऐड कर दूं, अगर आप इजाजत जी दें जी तो। बिल्कुल। इसमें यह है सर कि वन ऑफ द वेज कुड बी के
we start something like boot camp and train people ourselves. ठीक है, तो उसमें ये होता है कि हमें बच्चों का पता होता है, स्टूडेंट्स का पता होता है कि they actually know something जो उनकी CV पे है. Just like अभी ईमबा का जो है वो एक बूट कैंप ऑलरेडी आईकोड ग्रुप पे चल रहा है, जिसमें हम जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनको पाइथन में वेब डेवलपमेंट जो भी रिक्वायरमेंट है ईमबा की, हम उनके लिए स्टूडेंट्स ट्रेन करते हैं. उनमें फिर जो हमें मुनासिब लगता है उनको भी हम CV फॉरवर्ड करते हैं, एंड देन ईमबा कैन इंटरव्यू देम एंड ऑफर द जॉब. So that could be another way if sir wants to hire someone, maybe there could be a possibility in discussing. बिल्कुल, that is right. Boot camp start कर बिल्कुल. लेते हैं on the topic जिस पे मतलब कोई भी requirement की है तो उस पे boot camp अगर हम start कर ले, and after training it would be sure कि इस बंदे को वाकई relevant skills आती हैं, and then they can interview him. नहीं जी, हमारा जो चीज़ हम बना रहे थे उसमें बूट कैंप वगैरह और सारा कुछ रखना चाह रहे थे. और वो हम वी वांटेड टू इंट्रोड्यूस ये जो पायोमेट्रिक्स, आपने एक साइट का शायद सुना हो, जो बेसिकली जजेस योर इंटेलेक्चुअल DNA. पायोमेट्रिक्स है, उसके बाद वो है एक अभी मैं भूल गई हैं साइट्स वगैरह, जो टेक्निकल ये सारी AI रिलेटेड चीज़ें थी. सो वी वांटेड टू इनकॉर्पोरेट ऑल दैट टू आइडेंटिफाई द राइट, जो लोग बेसिकली CVs में गलत चीज़ें लिख देते हैं, उनको हम किसी तरीके से रिमूव करके वी कैन फाइंड राइट रिसोर्सेज, एंड उनमें से जो अच्छे हैं उनको हम खुद रख लें और बाकी उनको हम आगे पेच कर दें. इसमें बिजनेस भी था और अपने लिए भी था, बट just to devise all that thing, I couldn't find the right people to do that. तो बूट कैंप तो अगेन बेसिक लेवल पे होगा ना. I need somebody to organize the whole thing. चलें, ठीक है, इस तरह करें, आप हमसे कांटेक्ट करें और आप हमारा प्लेटफॉर्म ज्वाइन करें. विल ट्राई टू फाइंड आउट. यू नीड सम, मतलब जो मोहम्मद तला कह रहे हैं वो भी ठीक है, दैट इज फॉर डेवलपिंग अ टीम. और आप चूंकि एक टीम लीड की कोशिश कर रहे हैं, somebody टेंशन किसको करूं जी, मतलब कि वो आईकोड गुरु आप में जाके पर्सनल मैसेज कर सकते हैं, मुझे कर सकते हैं. मेरा नाम रिजवान गफ्फार है, जफर शाहिद हैं, ये मोहम्मद तलहा हैं. मतलब आप किसी को भी मैसेज करें. आप इस पे हैं, लिंक्डइन पे हैं? जी, मैं लिंक्डइन पे भी हूँ. मैं आई थिंक मैसेज ओवर देयर जी. चलें, ये एक मैं ऐड कर दूं, ये अपने कंपटीटर को फाइन करें और अपने कंपटीटर का जो टॉप है उनको मतलब किसी तरीके से सेपरेट कर दें. हाँ, मतलब देयर आर मल्टीपल वेज, दैट इज आल्सो वन वे के. लेकिन चूंकि शायद मेरा हाल है वो कोई नया काम करना चाह रहे हैं, तो दिस इज समथिंग दैट इज, शुरू में ये चैलेंजिंग होता है जब आप, तो इफ यू फाइंड द राइट पर्सन्स, देन हर जगह यही है, गवर्नमेंट में भी यही है, आप यू फाइंड द राइट पर्सन्स इन राइट मिनिस्ट्रीज, इन राइट ब्यूरोक्रेट्स, तो चीजें अच्छी चल जाती हैं. मतलब इट्स नॉट समथिंग व्हिच इज स्पेसिफिक टू ओनली वन थिंग. यू मतलब आप देखें ना, आपका जो लीडर है या प्राइम मिनिस्टर है या चीफ मिनिस्टर है, ही कैन नॉट डू एवरीथिंग. हिज जॉब इज टू फाइंड द करेक्ट टीम. ठीक है, और वो करेक्ट टीम नहीं मिल रही होती लोगों को. तो ठीक है, चलें, चलें, बिल्कुल आप मुझे लिंक्डइन पे कांटेक्ट करें एंड वी विल इंशाल्लाह ट्राई टू फाइंड आउट समथिंग. सर ये जो मटेरियल हमने डिस्कस किया है या ये जो लिंक हमने देखे, तो ये कैसे मिलेंगे हमें या किस तरह से अवेलेबल होंगे? मेरा ख्याल है कि हम इसको पोस्ट करेंगे, जो हमारा आप जो चैनल नहीं है हमारा ये वेबिनार वाला चैनल, उसमें हम ये पोस्ट कर देंगे. आप हमारा स्लैक ज्वाइन करें, वहाँ पे ये सारी इन्फॉर्मेशन दोबारा पोस्ट कर देंगे हम. चलो ठीक हो गया, जो आज मैम कुलसूम ने शेयर की थी. ठीक है, चलो, ओके, चलो, मुझे कहीं निकलना है. थैंक यू. ओके, अल्लाह हाफिज़ एवरीवन. अल्लाह हाफिज़ सर. सर एहसान, आपका कोई क्वेश्चन है आप पूछ लें, फिर उसके बाद हम सेशन एंड कर दें. सर सॉरी मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछ रहा हूँ. आई हैव लर्न दैट कि MIT हो गया या स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी हो गई, दे आर $1 trillion economies in themselves. So I just want to know how did they achieve this success? Because मुझे यहाँ पे मैं नर्स पे पढ़ा रहा हूँ, तो पिछले दिनों जो है ना मेरी ओरिएंटेशन मीटिंग थी, तो उस पे भी सस्टेनेबिलिटी और इस तरफ जो है ना मतलब ये फोकस कर रहे हैं नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी में. तो आई जस्ट वांट टू आस्क कि ये कैसे रेप्लिकेट हो सकता है पाकिस्तान के एनवायरनमेंट में?
just to understand your question better, आपका question है कि ये जो स्टैनफोर्ड में MIT में जो सक्सेस है, रिसर्च सक्सेस है, जो वो कैसे रेप्लिकेट हो सकती है? जी सर, बिल्कुल एग्जैक्टली। तो उसमें सर ये है कि वेरी फर्स्ट थिंग, द फंडामेंटल थिंग जो हमें जिस चीज की जरूरत है, दैट इज कोडिंग, दैट इज टेक्निकल स्किल्स, क्योंकि उसी के बाद हम रिसर्च पे जा सकते हैं। व्हाट्स हैपनिंग इन पाकिस्तान इज के मोस्ट ऑफ द रिसर्चर्स जो कि ऑलरेडी रिसर्च हो गई होती है, उनमें ही हम कुछ ट्विकिंग करके, कुछ चेंजेस करके, कुछ थोड़े बहुत पैरामीटर्स चेंज करके, एंड यू नो वी लुक फॉर स्टैक ओवरफ्लो एज समथिंग, तो हम उस पे जो है उसी के ऊपर, क्योंकि इट्स कम्प्लीटली लेजिट कि अगर आप उसको चेंज करके, पैरामीटर्स चेंज करके आप एक रिसर्च करें, तो दैट इज लेजिट रिसर्च, और हम उसी के ऊपर पेपर्स लिख देते हैं, जो कि मोस्टली हो रहा है। मैं ये नहीं कह रहा कि सब लोग ऐसे ही करते हैं, बट मोस्टली केसेस में पाकिस्तान में ये हो रहा है। और उसकी फंडामेंटल रीजन है कि हमारी जो टेक्निकल स्किल्स हैं, जो हमारी कोडिंग है, जो कि AI में भी इस्तेमाल हो रही है, मशीन लर्निंग में, हर जगह पे, हर फील्ड में आजकल इस्तेमाल हो रही है, इवन बायो इन्फॉर्मेटिक्स और जो भी आपकी डोमेन्स है, उन सब में इस्तेमाल हो रही है। हमें वही फंडामेंटल स्किल ही नहीं आती। तो वेरी फर्स्ट स्टेप आई थिंक कि जो हम ले सकते हैं, दैट इज टू यू नो टीच और यूथ कोडिंग, और इसी के ऊपर जो है वो माइकोड गुरु पे काम कर रहे हैं। ये जो 6 सेशंस दिन में होते हैं, ये 6 सेशंस डिफरेंट टेक्नोलॉजीज पे जरूर होते हैं, लेकिन हम उनको जो है वो एज अ यार्डस्टिक यूज करके एक तरीका यूज करते हैं जस्ट टू लर्न कोडिंग। तो हम कोडिंग के ऊपर ही काम कर रहे हैं, और जो हमारे स्टूडेंट्स जा रहे हैं रिसर्च के लिए अब्रॉड में या जॉब्स कर रहे हैं, दे आर वेरी प्रोफिशिएंट इन कोडिंग, जिसकी वजह से वो जो है वो अपनी उस लेवल को टच कर रहे हैं कि वो गूगल में, अमेजोन में, इस तरह की बड़ी कंपनीज में जो है वो जॉब कर सके। और ये बात एक है कि स्टैनफोर्ड और MIT की रिसर्च डोमेन, वो तो इसमें नो डाउट के दे आर वेरी गुड, लेकिन अगर आप देखें तो अगर रिसर्च वाइज भी देखें तो गूगल शुड बी एट टॉप, कि जो गूगल के जो हायरिंग है, जो गूगल के जो जितने भी, अब सिर्फ गूगल की बात नहीं कर रहा मैं, सब जो टॉप 10 कंपनीज है मैं उनकी बात कर रहा हूँ, कि जो ये हायर करता है, ये टॉप ब्रेन हायर करता है। तो इवन स्टैनफोर्ड MIT के अंदर भी उतना सक्सेस रेट नहीं है जितना गूगल में है, अमेजोन में है, या इस तरह की बड़ी कंपनीज में है। और उसकी वजह यही है कि उनके पास बंदे वो हैं जिनके पास टेक्निकल स्किल्स वाकई हैं, जिनको कोडिंग वाकई आती है। तो जो रेप्लिकेट करने का बेस्ट तरीका है वो यही है कि सबसे पहले हमारी यूथ जो है, इसको ये जो हम CV पे लिख देते हैं कि आई एम प्रोफिशिएंट इन दिस लैंग्वेज एंड दिस लैंग्वेज, तो उसको सच किया जाए सबसे पहले। तो उसका एक ही रास्ता है कि हम कोडिंग सीख सकें, और ये जो iCode ग्रुप पे हम दिन रात काम कर रहे हैं, वो इसी चीज पे काम कर रहे हैं। तो आई थिंक दैट शुड बी अ वे टू गो। Okay, sir. Thank you. Thank you so much. ठीक है everyone, thank you so much for joining and for your time. Inshallah we'll meet again tomorrow. कल हमारी workshop है again. Be sure to attend it. Okay जी, Allah Hafiz. Allah